Hello friends, today we will look at a sample question from the computer skill test for ASO of previous year. हम लोग आज MS एक्सेस में ये एक्सरसाइज ट्राई आउट करेंगे. इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली एक टेबल क्रिएट करना है MS एक्सेस में, और ये टेबल आपके MS एक्सेस डेटाबेस में एम्प्लॉय नेम के डेटाबेस में होना चाहिए. टेबल में 3 फील्ड्स रहेंगे, 3 कॉलम्स: एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ. और एम्प्लॉय आईडी का जो डेटा टाइप रहेगा, मतलब किस तरह का डेटा रहेगा एम्प्लॉय आईडी में, वो दैट विल बी नंबर. एम्प्लॉय नेम विल बी टेक्स्ट and date of birth will be date. Now once you have created the table, then you need to insert these 3 records into the table, and then once we have the data in the table, the ask is to insert a new column, gender, which will be before the date of birth, and the data you have to fill it up. The other aspect there would be, after the data is there in this table with 4 columns, you need to sort it in descending order by the field of employee ID, and then it is also asking you to delete a record. So creating a table in a database, making sure that the table has the right data types, entering data, modifying the table by adding a new column, sorting the data based on a column, deleting a row from the table. Okay, so let's get started. As I mentioned, आप अपने लैपटॉप में MS ऑफिस के साथ MS एक्सेस आता है. You should have it. Just check for access. See, it matches here, so you can open up. Let's create a blank database. It is saying that our database name has to be EMP, right? So let's quickly check. Yeah, it's EMP. So go on and create the database. So now it is by default creating a table for you. So switch to the design view of table. Give the table the name, say employee, and go on and design the table. Employee ID, number, employee name, text, date of birth. So EMP underscore name डालिए फील्ड में, EMP underscore name, ID, date of birth. So this one is EMP underscore ID, EMP underscore name, and then DOB, date of birth. And it's saying that the date of birth, the data type will be, आप यहाँ से date को चूज़ कीजिए. एम्प्लॉय नेम को आप टेक्स्ट चूज़ कीजिए. सो हम लोग इसको एम्प्लॉय नेम लेट्स पुट इट लॉन्ग टेस्ट, और एम्प्लॉय आईडी आप यहाँ पे नंबर डालिए, राइट. सो एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर इन द प्रीवियस ट्यूटोरियल, मेक श्योर दैट यू remove the default ID and if assign a column, the ID which is supposed to have unique values. In this table of employee ID is the primary key. तो हमने यहाँ पे इसको प्राइमरी की किया. कैसे किया है, आप कोई भी कॉलम फील्ड को चूज़ कीजिए, यहाँ पे प्राइमरी की आइकन को प्रेस कीजिए. ओके, सो आपका टेबल अभी डिज़ाइन हो गया. टेबल डिज़ाइन हो गया है. सो द फर्स्ट पार्ट of employee database created, table created with this format. Now let us insert the data. चलिए,
सो इंसर्ट करने के लिए लेट्स गो टू द डेटा शीट व्यू. ओके, सो सेव द टेबल. सो डेटा शीट व्यू में आप डालिए एम्प्लॉय ID 238 ABC. Date of birth is 15/3/1975. And फिर आ गया आपका 235 XYZ. डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपका आ रहा है 10/4/1980. So 10/4/1980. So then is 236 PQR. 236 PQR. Date of birth is 23/11/1970. 23/11/1970. Okay. So your data is now available. Okay. So we created the table using the design view, जहाँ पे आप फील्ड के नाम डालते हो, डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हो. उसके बाद once the table is there, then you go to the data sheet view and you enter the values. Okay, we have created 3 rows. Now insert a new column named gender before date of birth. Before date of birth, suppose आपको इसके आगे. So let's go to the design view. Okay, so go to the design view. The question is insert a new column named gender before date of birth. So go to date of birth previous to that, insert rows. Okay, so सिलेक्ट किया आपने यहाँ पे, फिर राइट क्लिक किया, मेन्यू पे इंसर्ट रोज़ आएगा, फिर इंसर्ट रो पे आप अपना नया फील्ड क्या डालना है, जेंडर. तो जेंडर का डेटा टाइप क्या होगा, टेक्स्ट रखते हैं क्योंकि ये केवल मेल फीमेल है, तो ये छोटा ही टेक्स्ट है, तो शॉर्ट टेक्स्ट में यहाँ काम चल जाएगा. ठीक है, तो यू सेव इट. नाउ इफ़ यू गो एंड लुक इनटू द डेटा शीट व्यू, you see gender is there but no values are there. So in the question it is asking you to give data row wise MMF. So first row is M, second row में F M डालो, थर्ड रो में F डालो. ठीक है, तो आपका टेबल मॉडिफाई हो गया, एक नया कॉलम आपने ऐड किया एसेंशियली, और उसमें आपने वैल्यूज़ भी डाल दिए. If I am going a bit fast, you can always slow down the speed of the video and play it. Sort the above table in descending order with respect to employee ID. तो डेटा शीट व्यू पे चलते हैं फिर से. व्यू, डेटा शीट व्यू, and data sheet view we have to see saying that sort the table in descending order with respect to employee ID field. Descending order employee ID. So employee ID को चूज़ कीजिए. देखिए यहाँ पे आ रहा है sort smallest to largest, that is ascending order A to Z. हमें descending order करना है. अरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एम्प्लॉय आईडी को आपको
sort the table in descending order with respect to किस फील्ड पे, एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID। तो हम एम्प्लॉय ID को सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पे इस बटन इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे देख रहे हो ऑप्शन शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो हमें डिसेंडिंग करना है तो शुड बी स्मॉल लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया। अभी देखो 238 पहली वाली रो बन गई। 238 is the employee ID ABC female, and 236 PQR male, 235 XYZ male. So now you have completed the activity that was there planned, and then he is asking us to delete the row with employee ID. So delete the row with employee. So the last column it's asking to delete. So you select the record, right click, you get the option new record, delete record. So we go and we delete it. Okay, so we deleted that. Yes, so now you save it, and as I mentioned, you can always export a table to a spreadsheet. So you can Excel that, and you can and go to the table where you are storing the data. Here we are storing it. We are showing this employee 1. This is employee underscore export. Okay, so let's do that. It's saying successful, close it. You see employee export is there. See, you have the output also available. So that's all for today. In the next session I will walk you through to 2 more sample questions of the computer skill based test, and here we are looking at the MS Access database part. Okay, thank you, thanks.